Hello everyone, welcome to Path IAS Academy. This is Akshay Guru Bhaiya, Faculty of Geography and Environment. तो आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, नया वीडियो लेकर आया हूँ बेस्ड ऑन सम न्यू फैक्ट्स. ओके, क्योंकि जस्ट 5th of June 2022 UPSC had a preliminary examination. Okay, तो just based on demand we have now video for geography preliminary question analysis 2022. okay, so watch this video till the end. बहुत सी नई चीज़ें आपको देखने मिलेगी, बहुत से डिफरेंट ट्रिक्स देखने मिलेंगे, क्वेश्चन को एनालिसिस कैसे करना है ये. एंड एज यूजुअल फॉर माय वीडियोस लास्ट में कुछ आप लर्निंग्स भी लेके जाएंगे. ओके, सो जस्ट वॉच दिस टिल द एंड. स्टार्ट करने से पहले कोट से स्टार्ट करना चाहूँगा, विच यूपीएससी बिलीव्स इन. Uprooting the established standards is what magic is. Like कि अगर कोई चीज़ अगर कुछ स्टैंडर्ड्स में established हो रही है, that means now it is what getting so easy to predict. Okay, and UPSC doesn't want that examination to be so predictable, and thus is what UPSC is so interested in this kind of magic. Different say they are quite interested in कि कुछ क्वेश्चंस के नेचर चेंज कर दिए जाए, एंड दैट्स व्हाई इट रिड्यूसेस द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन. ओके, तो यूपीएससी इज हैविंग मास्टरी से इन दिस काइंड ऑफ थिंग. इस साल का जो ट्रेंड था ज्योग्राफी के लिए से इट इज समहाउ पॉजिटिव ऑन द काउंट कि कुछ लास्ट 2 years से एक 2021 यू विल फाइंड क्वेश्चंस वेयर होवरिंग अराउंड और रेंजिंग अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस आ रहे थे. जबकि उसके पहले अगर हम देखेंगे इसी वेटेज तो वो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 10 to 15 के रेंज में. ओके, लाइंग समवेयर अराउंड दिस रेंज. बट नाउ अगेन दिस ईयर यूपीएससी फिर से ज्योग्राफी का फोकस से और अटेंशन इंक्रीज कर दिया है. सो क्वेश्चंस आर से ऑलमोस्ट 11 to 12. राइट, हमने तो 12 कैटेगराइज किया है क्वेश्चंस को एज सच. ओके, बट ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट एनालिसिस 11 to 12 क्वेश्चंस है. सो जो यूजुअल ज्योग्राफी जो वेटेज यूपीएससी देती थी से इस 2020 पेपर में 2022 में आपको ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ वेटेज दिखेगा. ओके, सो द थिंग इज यू कैन नॉट स्किप दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, द बेसिक फाउंडेशन सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. ओके, सो नाउ अब इस वीडियो को जस्ट लाइक से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर बनाने के लिए व्हाट मैंने इस वीडियो को से 4 सेक्शंस में अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया. दो ये सेक्शंस रिजिड नहीं है सच, बट से हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जिससे हमारा डिस्कशन और आपकी स्ट्रैटेजी जो बननी है ओके फॉर ज्योग्राफी वो ज़्यादा ईजी रहेगी फॉर दिस केस. एंड दैट्स व्हाई से 4 अलग अलग सेक्शंस से वी आर गोइंग टू discuss this whole geography paper. The first one, physical geography. Second, Indian geography. Then world geography, and then map based location questions. Okay, mapping. So 4 अलग अलग different heads में हम ये 12 questions almost से cover करेंगे with their approach to study, with their interpretation, with the basic information about it, और question को solve करने के कुछ tricks. Okay, so आइए देखते हैं this geography questions. Okay, analysis. So the first question in our list, it is जैसे एग्जाम जून में थी राइट 5th of June, तो यूपीएससी ने सोचा कि चलो जून पे ही कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द first half of the month of June, second half of the month of June, first half of the month of July, and second half of the month of July. Right? तो you are quite aware about, आपने इतना बेसिक तो पढ़ा ही होगा राइट कि solstice and equinoxes. Okay, solstice and equinox, and under this 4 different annual dates है which reoccurs. Okay, reoccurs say annually. Now for northern hemisphere the longest day जो
अपीयर होता है और जो अकर होता है, इट इज ऑन 21st ऑफ जून, टू बी नोन एज समर सॉल्स्टिस, क्योंकि सोलर रेडिएशंस आर मोर परपेंडिकुलर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे समर रहेगा। और समर है दैट मीन्स डे इज लॉन्गर देन नाइट, almost 14 to 15 hours of day, okay? Or again on the reverse condition, okay, 21st of December जब perpendicularity is on tropic of Capricorn and that's why यहाँ पर southern hemisphere में day longest रहेगा, okay, during the December time. So UPSC simply asks, this is what equinox, right? These 2 dates about equinox. Now what UPSC is simply asking you that 21st of June, which is the longest day in the northern hemisphere, is in which half? Don't you think बहुत easy category का क्वेश्चन है? Yes, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा यार, right? So 21st of June, the longest day you will find in the second half of the month of June. Answer is B. Okay, I think everyone is quite clear with this thing. Then the second thing, it is about say someone may categorize science and technology में भी कर देगा इसको, science में basic, और ये एक geomorphology solar system related thing है, okay? So that's why I consider it as a part of physical geography. Now the question is, if solar storm or solar flares reaches the earth, which of the following are the possible effects on the earth's surface? So in order to solve this question, you must know, देखिए basic information क्या है, that what these solar flares are, what is their nature, and then the possible impacts. क्योंकि अब इसके हर impact तो याद नहीं रख पाएंगे हम, yes, हर impact तो याद नहीं रख पाएंगे. So this question must be solved by means of some logical understanding. Okay, by means of some logical understanding. Okay, so that is what the way how you are supposed to tackle this question. Now solar flares क्या है? Simply है a local eruptions of electromagnetic radiations on the sun surface. Okay, और ये electromagnetic emission जो ये है वो lead करेगा say some charged magnetic particles. Now this magnetic particles then interact with the different celestial bodies like say Earth. Yes, Earth के साथ interact करेगा. Earth is having her own magnetism. Yes, Earth का कुछ अपना magnetism है, we have seen. So then ये जो charged particle है जो having their own magnetism also, now they say somehow disrupt the magnetism of the Earth, and in that case it has its impact mainly on some intangible aspects. Okay, just like say कि जो charged particles है, solar flare that doesn't mean fire. Okay, तो ये जो solar flares है वो mainly say they are in the charged particle format, और अर्थ सरफेस पे just because कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट, सरफेस ऑफ द अर्थ को, so you don't find say significant impact on the earth surface as such, mainly in terms of physical phenomena. Okay, like say कुछ physical phenomena mention है यहाँ पे जो कि rare occurrence रहेंगे if this phenomena is mainly led by magnetic or charged particles. Okay, so just have a look over. देखिए GPS and navigation system could fail. GPS and navigation, it just because this is what a communication activity. Yes, so communication activity mainly led by satellites. Now India का जो navigation system है RNSS, okay, or Navig as such. So this thing, okay, is what supposed to be disturbed. It just due to क्योंकि ये जो system impact करेगा on the satellite, okay, on the communication, and that's why yes there is a possibility for this case. The second thing is tsunami. अगर just like say if GPS and navigation system could fail, in that case ये भी तो possibility बनती है, orbits of the satellites could be disturbed क्योंकि satellite से connection है, तो yes ये भी connection में आता है. Okay, second, tsunamis could occur at the equatorial region. अब ये आ गया देखिए physical phenomena. Okay, so physical phenomena पहले ही मैंने आपको बताया, physical phenomena in the sense कि charged particles वो मेनली कनेक्टेड है और मेनली हैविंग देयर इम्पैक्ट ऑन से कम्युनिकेशंस और से ए काइंड ऑफ ए intangible aspect. Okay, so physical, now specifically for tsunami, those are also to be known as harbor waves. Okay, तो ये harbor waves जो है according to plate tectonic theory इनका origin रहेगा due to tectonic activities, volcanoes, underwater landslides, और वे
Okay, so solar flares are having rare possibility that they could lead to tsunamis. Okay, तो ये ऑप्शन तो हम अभी होल्ड पे रखेंगे ऑन द काउंट कि इट डजंट साउंड से ए सॉलिड आर्गुमेंट एज सच. देन थर्ड, पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड. यस, देयर आर मेनी इंसिडेंसेस जब सोलर फ्लेयर एक्टिविटीज बढ़ी है. So many time power grid electricity, okay, that disruption happened. Okay, then intense auroras, okay, auroras, those are what colored light phenomena in the high latitude region. Okay, polar region में आपको auroras देखने मिलेगी, colored light phenomena. तो yes, ये भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये charge particle light phenomena है. Then forest fires could take place over much of the planet. And in that case, as I told you, physical phenomena है, क्योंकि flare that doesn't mean fire. Okay, what happens many time कि अगर किसी ने इसको wrong attempt किया है, it may be due to the reason कि flare and fire thing. But no, it is absolutely not that way. Okay, so that fire, forest fire के बहुत सारे अलग reasons है, but solar flare is absolutely not one of them. Okay, so this one, and then orbit of the satellite and short wave radio communication of the aircraft could be disturbed. Okay, flying over polar regions could be interrupted. Yes, so as this aircraft is flying say somewhere around 8 to 12 kilometers, so it is having possibility that कि solar charge particles उसके जो communication means है interrupt करेंगे. Okay, and that's how say if you say by technique of elimination, क्योंकि the thing is always to remember whenever you find a question prelims में जब भी मल्टीपल ऑप्शंस है ना 4, 5, 6, 7, 8 जस्ट लाइक से ऑप्शंस रहेंगे इतने सारे, इन दैट केस ऑलवेज दैट क्वेश्चन ये इलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व होगा. ओके, इलिमिनेशन मेथड से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो ऑन दैट काउंट यू कैन से बाय एलिमिनेटिंग 2 and 5, yes, we arrive finally at this way, third C option. Okay, I think everyone is clear that how to tackle this kind of question. Then next, this question say somehow moderate to difficult nature and it demand at first concept plus logical understanding. So concept भी clear चाहिए आपको about high cloud and low cloud, and then about their logical understanding. Actually ये जो question framed हुआ है, so this is what is specifically taken from NASA Earth Observatory site. Okay, अगर आप उस site पे जाके देखें cloud से related information में, तो आपको इस as it is statement मिलेंगे say but in a say alternate statements. Okay, alternate format में. So the first thing, clouds, yes, you are quite aware about those are lying say in the sky है, which is basically what say having different solid, liquid and gas components they are made up of. Okay, so high clouds and low clouds. High clouds based on simply this is what based on the altitude of their existence. Like say low cloud अगर रहेंगे तो ये 0 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक रहेंगे. Then 2 kilometers to 6 kilometers almost you will find the middle cloud, and above 6 kilometers you will find high clouds. Okay, so अब अगर just like say based on this figure or diagram which is shown over here, आप ये देखेंगे कि high clouds are comparatively less dense, right? Less dense, but those clouds lying on the surface or say close to the surface, near to the surface, those are quite dense. अब डेंसिटी अगर रहेगी तो उनमें रिफ्लेक्शन पोटेंशियल भी डिफरेंस रहेगा. यस, एब्जॉर्प्शन पोटेंशियल भी डिफरेंस रहेगा, एंड दैट इज व्हाट लॉजिक यूपीएससी एक्चुअली वांट्स. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट high clouds primarily reflects solar radiations and cool the surface of the earth. So high cloud जो comparatively less dense है, reflection potential comparatively less है. Yeah, they can have more absorption potential on the reverse. Okay, infrared radiation absorb कर सकता है, but say solar insolation पे say limitations, it is not the property of high cloud, but rather it is a property of low cloud. So low cloud have the high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. Low cloud on the actually they are more dense, and that's why वो reflect करेंगे this solar incoming radiations. Okay, low cloud reflect करेंगे solar incoming radiations, and then this cloud rather absorb more infrared radiation, high clouds, and that's why the thing is these two statements say this both stand incorrect.
And the answer is neither one, neither two. Are you getting the nature of the question? Okay, यूपीएससी का हर कोई क्वेश्चन से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड के साथ है, एंड वंस यू गेट इन दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, सो क्वेश्चन को टैकल करना कंपैरेटिवली इजियर है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडियन ज्योग्राफी. फोकस रहेगा यूपीएससी का ऑन द इंडियन ज्योग्राफी based on say varieties of the thing. Okay, different dimensions UPSC just trying to cover in the Indian geography. Just have a look over the first. Indian resources or resources, those are basically what say most important from the perspective of energy security. Okay, though ye question jo hai, this question is based on your fundamental knowledge, based on your fundamentals. How strong fundamentals are you having with say with respect to now over here monazite. Now what is monazite? Monazite is simply a phosphate group of mineral which is reached with the rare earth metals. Okay, mainly like thorium. तो monazite का significance ही ये है क्योंकि based on this monazite we have devised our civil nuclear program. 3-stage nuclear program जो है हमारा, so it is actually based on thorium, and this thorium is basically derived say from monazite. And India is one of the largest, is having one of the largest reserve of this monazite thorium. Okay, so ये fundamental based question है. Just have a look over the nature of the question. Monazite is source of rare earths. Yes, it is. Then monazite contains thorium. Yes, it do. Okay, thorium content है, rich content है in fact Indian soil में. Then monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sand. Now the key word over here is entire. Okay, entire की है, that means कि अगर इंडिया का कोस्ट अगर हम देखेंगे, so starting from गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, then आंध्रा, ओडिशा and Bengal. So that the statement is just trying to say convey the message कि हर किसी region में you will find this monazite soil. Okay, so it sounds somehow extreme. It sounds somehow extreme, but let's check the fourth statement then. In India, government bodies only can process or export monazite. Now, as this thorium is radioactive metal, yes, so अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन अगर रहेगा या प्राइवेट हैंडलिंग रहेगा और इश्यूज जो अराइज हो गए, सो इन दैट केस इट बिकम्स सो डिफिकल्ट एक्चुअली टू मैनेज दोस क्राइसिस. एंड दैट्स व्हाई एटलीस्ट एज ऑफ नाउ सी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये ही एक से PSU है which handles all those aspects related with the monazite. And that's why this statement stand incorrect. Logically भी say we can connect it, even though no one is quite aware about this particular thing, but logically हम इसमें say we can conclude that thing. Now say it occurs entire in the Indian coastal land. Have a look over. Specifically in Kerala, yes, there is monazite. Okay, ये monazite say phosphate mineral है, monazite phosphate mineral. And now say there is absence over here, there is absence over here, this way and also this way. So not entire coast, yes, but absolutely Kerala and that region, okay, it is quite rich with the monazite soil. So answer that stands third, it stands incorrect, and ultimately we arrive at this way, B, 1, 2 and 4. Are you getting that? This is what a kind of fundamental question जो UPSC आपके basic knowledge test कर रही है. Next question of somehow say of moderate to difficult level. Okay, somehow difficult level है just because कोई unknown locations or very rare known location to be more precise, उस पर question पूछा. The Gandikota Canon of the South India was created by which of the following rivers? Now the answer is Pennar. Okay, the Pennar river, it is what? Say flowing like this ultimately, and then it leads to the formation of this canon, which is also to be known as the Grand Canon of India. Right? Grand Canon of India. Now, what it means by canon, what it means by gorges, and what it means by V-shaped valley, please let me know in the comment box. Okay, एक 3 simple terms है जो basic आपके understanding reflect करेंगे about the geography. So let me know the difference between these 3 terms. Okay, in the comment box. Next, again
लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और यूपीएससी फॉर श्योर विल आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऑलवेज विल आस्क क्वेश्चन दैट कुछ रीजन दिए जाएंगे, राइट, से ओवर हियर माउंटेन पीक्स हैं, एंड देन करस्पॉन्डिंग रीजन्स ऑफ देयर लोकेशन, से नामचा बरवा गरवार हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, एंड नॉकरेक सिक्किम हिमालय. सो अब अगर स्पेसिफिक, इफ वी जस्ट ट्राई टू से लोकेट देम सो स्पेसिफिकली, नामचा बरवा इट इज इन दी अरुणाचल प्रदेश रीजन, ओके, साउथ ईस्टर्न तिबेटियन पार्ट रीजन है. देन नंदा देवी, यस इट इज, सो ये तो इनकरेक्ट है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, एंड नॉकरेक सिक्किम हिमालय. नॉकरेक इट इज इन दी मेघालय, ओके, इट इज नॉट a part of Sikkim Himalaya as such, it is in the, say, Nokrik is also biosphere reserve, Nanda Devi is also biosphere reserve, okay, so this is not a part of Sikkim Himalaya, you left only with 2, okay, so answer is 2 only. अब इसमें the thing is how strong you are at mapping, okay, and say location, that is what UPSC is just trying to ask you about. Then quite difficult level question, say Assam, yes, we are quite aware about that it is the one of the largest tree producing state in India. Assam, West Bengal, ये दो स्टेट जो है, त्रिपुरा कुछ एक्सटेंड में, yes, it is having tree production. But now the question is trying to ask you how many of the above generally known as tree producing states. And the thing is कि यहाँ पर जो मैजिक था ना यूपीएससी का, राइट, सो मैजिक यहाँ पर है, that instead of giving just like say the well-known options like 1, 2 and 4, 1, 2 and 3, like those are quite helpful for elimination. अब UPSC ने यहाँ पे quite trick किया है, okay, and if this kind of pairing, okay, or only one state, only two state and the way, now it limits your elimination abilities, okay, elimination का जो scope है वो limit होता है, and that's why this question somehow stands in a difficult category. Okay, so my suggestion is कि अगर ऐसे type of question if you are not sure about, so just rather leave it, क्योंकि always just like say rather than attempting it negative, it is better to just to say leave it as it is. Okay, so फिर भी just like say कि आसाम, बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश and उत्तराखंड, these are what few states, tea producing states in India. Now आंध्रा नहीं है, okay, then Kerala, Himachal Pradesh, Tripura, okay, so yes, these three are tea producing state. The answer stands 3 states, okay, so that is what the case, but yes, it is absolutely somehow so specific question, okay. Then the most important thing कि जब भी हम geography कभी term coin होगा, so the first thing that comes into our mind is map, yes, ग्लोब आएगा या तो मैप आएगा एंड द वे, एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी, बिलीव मी, ऑलवेज विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन द मैपिंग. 3 to 4 क्वेश्चन ऑलवेज रहेंगे, वॉट एवर द वेटेज गिवन टू ज्योग्राफी, ओके, यूपीएससी ज्योग्राफी, बट मैप बेस्ड क्वेश्चन तो आपको ऑलवेज देखने मिलेंगे. सो जस्ट नाउ द फर्स्ट थिंग, जहां पर जिस रीजन का बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में मेंशन था, इवन इफ इट इज टुडे आल्सो, इट इज इन द करंट अफेयर्स आल्सो, राइट, दिस रीजन अफगानिस्तान, वन ऑफ द डिस्टर्ब्ड रीजन है, से इट जस्ट ड्यू टू इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, and that geographical location, it leads to some specific condition over in the Afghanistan, and UPSC is now asking you for that case, which of the following countries borders with or shares borders with Afghanistan. तो अगर say if someone during reading this news, अगर आपने तभी उस वक्त इसको locate कर दिया होता, in that case इस question को answer करना difficult नहीं था, for sure. Okay, so that is what the thing, that whenever you are going through any particular news, तो आपको उस चीज को locate करना है, that important thing है. So Azerbaijan, दिख रहा है कहीं Azerbaijan? No, so Azerbaijan, it is not that one which shares the border. Kyrgyzstan, just have a look over, Kyrgyzstan भी नहीं है, okay. Then Tajikistan, yes, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. In addition, Pakistan, India, China, okay, these are also, and Iran, this also shares border with Afghanistan, okay. So iska the answer is
3, 4 and 5. इजी है, एब्सोल्युटली इजी है, बट प्रोवाइडेड आपने आपकी मैपिंग स्किल्स अच्छे है, ओके, देन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर सो इजी टू अटेम्प्ट. नेक्स्ट, सीइंग वेटलैंड लेक. देखो यूपीएससी में ना प्रीलिम्स और इवन मेंस में कुछ थीम्स है जो रिपीट होनी है, ओके. जैसे लाइक से कि कुछ टॉपिक्स रहेंगे जो जिस पे आपको नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन देखने ही मिलेंगे. फॉर एग्जांपल वेटलैंड, यस, वेटलैंड्स में आपको 1-2 क्वेश्चन तो इसी एग्जाम में देखने मिलेंगे. लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर, ओके, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी आपको वेटलैंड पे क्वेश्चन है. लाइक से इन द सेम वे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे क्वेश्चंस रहेंगे. लाइक से इन द वे वेस्ट एशिया पे क्वेश्चंस रहेंगे जो इसमें इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन भी है, ओके, एग्जामिनेशन भी है. देन अंडमान एंड निकोबार रीजन पे भी रहेगा, तो रिवर सिस्टम पे क्वेश्चंस रहेगा. सो द थिंग इज यूपीएससी विल फॉर श्योर आस्क यू दैट द स्पेसिफिक रिपीटेटिव थीम क्वेश्चंस, एंड अगर आपको समझ आ गया, इन दैट केस इट बिकम्स कंपैरेटिवली इजियर, राइट, कि क्या चीज और क्या स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर करना है, ओके. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ से वेटलैंड्स, सो यहां पर सिंपली पूछा है वेटलैंड एंड देयर स्टेट्स. इजी है, यस. ज्योग्राफी, हमारे ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के लेक्चर में तो ये एक्टिविटी तो रेगुलर कॉमन ही है, दैट हम मैपिंग बेस्ड जो भी लोकेशंस है, नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व्स है, वो हम रेगुलरली लेक्चर में ही कवर किए जाते हैं. यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर इट सो सेपरेटली, इट जस्ट बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ लेक्चर. सो लेक्चर में ही आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ओके. सो ये लेक्चर में रेगुलर प्रैक्टिस है हमारी, दैट वी इंश्योर दिस थिंग. सो होकीरा वेटलैंड, होकेरा, it is in Jammu and Kashmir, not Punjab. Renuka, one of the smallest wetland in India, it is in Himachal Pradesh, yes. Rudrasagar, it is in Tripura, yes. Sastam Costa, it is not in Tamil Nadu, it is in Kerala. So the stands incorrect. So the question is again asking you, say leaving no scope for elimination as such, the answer is only 2 pairs. Correctly matched, okay, correctly matched. Reservoir states, same mapping, yes, reservoir or states. Now Ghat Prabha, yes, Ghat Prabha. This question stands somehow on the difficulty level, it just because कि कुछ locations ना बहुत well known नहीं है, well known locations नहीं है, and that's why it may creates a kind of confusion कुछ क्रिएट होगा. जैसे कि जो वेटलैंड वाला क्वेश्चन था, वेल नोन लोकेशन है तो यस यू कैन आंसर इट से सिंपली, बट से सम टाइम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर समहाउ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ऑन द काउंट कि जो रिजर्वायर्स है या और भी कुछ लोकेशंस रहेंगे तो वो वेल नोन नहीं है, ओके. सो दिस नाउ इफ यू वांट टू टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैपिंग स्किल्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड, ओके, मैपिंग स्किल्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड. और वो कैसे करने हैं तो वो लेक्चर में कंप्लीट किए जाएंगे, ओके. सो घाट प्रभा. Now Ghat Prabha, it is in Karnataka. So Telangana is not that case. Gandhi Sagar, Chambal River, yes. So Chambal River, it is having 2 dams. The first one constructed in Madhya Pradesh with the name Gandhi Sagar, and the another one in the Rajasthan with the name Maharana Pratap Sagar, okay, or Rana Pratap Sagar. So this stands correct. Then Indira Sagar, it is in MP. Indira Sagar, it is in MP. And it is the largest dam on the count of, or reservoir on the count of water, volume of water that it holds, okay. So this again stand incorrect. And Methuen Dam, it is what, the part of Damodar Valley Development Project, right. After independence जो project हुआ था Damodar Valley, तो उस particular project का part था, and the case is it is in Jharkhand, it is in Jharkhand and not in Chhattisgarh, okay. तो ये भी pair incorrect होता है. So answer just like no, wait. Now UPSC, अब हर बार ऐसा नहीं होगा, right, that they always ask you correct question, okay. यही तो है ना, यूपीएससी में कुछ ट्रिक तो रहेगा. So what your observation skill and attention power is what again going to check in this kind of question. That the question is asking you which of the above are not correctly matched. Not correct, incorrect पूछा है. So 1, 2, 3. Answer is C. Clear everyone? So this is what, this kind of question. Then world mapping. World mapping,
region often seen in the news and the country. Anatolia, Turkey. Like say Anatolia, it is in Turkey. Then Amhara, it is in Ethiopia. Yes, okay, yes. Then Cabo Delgado, it is not in Spain, it is in Mozambique. Current affair based question है, mapping. And Catalonia, it is not in Italy but rather in Spain. So this two stands incorrect, and now have a look over what question is asking you correct, right? So only two pairs are matched. Okay, so देखिए Mozambique, yes, this region, Ethiopia, Amhara region, and Catalonia of Spain. So these are what the four regions. Now what UPSC ना इस कैटालोनिया पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने. जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस वन. सेम रीजन रिसेंटली इन द न्यूज एंड कंट्री कैटालोनिया. ये क्वेश्चन है 2018. आर यू गेटिंग? सम क्वेश्चंस और से फ्यू ऑप्शंस में भी रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन, और अगर वो भी उस सेंस में भी अगर आपको पता हो, यू कैन एटलीस्ट इलिमिनेट वन और टू ऑप्शन. Okay, so that's why the analysis of previous year's question paper is must. As aspirant of UPSC, अगर आपको पेपर अगर आपने एनालिसिस नहीं किया, so you won't have a correct strategy how to prepare for. That's why what is my advice कि previous year question paper आपको repetitively review करने हैं. Okay, and I have proven those things also, right? कि बहुत सारे questions में आपको बताया भी हूँ मैंने. Then world geography questions. Now, the term Levant, often heard in the news, roughly corresponds to which of the following regions? Again, current affairs में है और वेस्ट एशिया पे क्वेश्चन है. मैंने जैसे बताया आपको वेस्ट एशिया, some themes are repeated for sure, right? So now this Levant, it is a having its roots word in French, which means to rise, or to rise, that means sun. So it is what in the east. So this Levant is mainly connected with the eastern part of Mediterranean Sea. Okay, eastern part of Mediterranean Sea, and it includes Syria, Lebanon, Jordan, Israel. So this, and say some part of Turkey also, which arguments are Turkey also, Cyprus also, it may include this thing. So this is what this Levant. So answer is eastern shores of Mediterranean Sea. Okay, somehow moderate या difficult level में ही है. अगर आपको पता नहीं होगा ये statement, so that becomes somehow difficult. Then is based on oceanography, based on some recent news. Okay, it just because Polar Code was signed, Polar Code was released by World Maritime Organization to UN clause, or say South China Sea disputes, or say that US naval ship entered into, okay, 2020-21 में US naval ship entered into EEZ, exclusive economic zone of India. तो उस सेंस में और विद दैट कंटेक्स्ट, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड. एंड हमारे इस ज्योग्राफी लेक्चर में दिस टॉपिक इज वन ऑफ द सेपरेट टॉपिक जो हम प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो अगर उस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, सो दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज जस्ट ट्राइंग टू फेच यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग के व्हाट आर द बाउंड्री लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल सी, व्हाट आर द बाउंड्री लिमिट्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड व्हाट इज द राइट्स, ओके, इनोसेंट पैसेज का राइट्स से टू द शिप्स, नेविगेटिंग शिप्स. Now, just have a look over. A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in accordance with the convention. Second, yes, this is what? Up to 12 nautical miles. Then, ship of all the states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea. Yes, right of innocent passage allowed hai. Then the EEZ shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured. And it is asking for correct thing. Let's have a look over the diagram. जो UN clause ने जो boundaries define किए उस according. This is what है baseline 0 kilometers, 0 nautical miles, 12 nautical miles पे आपको रहेगा territorial sea,
then from this 0 to 200 nautical mile EEZ, and beyond that high seas. So the question, yes, this is first statement stand correct, 12 nautical miles पे है, 200 nautical miles के लिए third statement stand correct, and right of in ocean passage, yes, this statement also stand correct, and that's why answer is okay. So this is what this question is about. So with this we have discussed almost 12 questions of UPSC Geography 2022 prelims. Now अब as usual जो हमारे lectures में जो हमारे videos में होता है, that if you have spent much time over it, that आपको कुछ outcomes मिलने चाहिए, right? तो with that view, what we learn, कि हमने इस वीडियो में क्या देखा, क्या चीजें सीखी है, that is what say the crux of the thing. The first thing, UPSC has key in fundamentals and conceptual understanding, right? Whatever be the nature of question, whatever be the year of examination, 23, 24, 25, UPSC is never going to say limit or never going to leave this fundamentals and conceptual understanding based questions, right? तो आपकी जितनी ज़्यादा fundamental strong रहेंगे और concept clear रहेगी, उतनी ज़्यादा possibilities कि आपका score भी ज़्यादा रहेगा. Okay, so do ensure आपकी conceptual clarity हर topic के लिए okay. Okay, then current affairs is an integral part, no doubt. UPSC is almost synonymous with the current affair. तो current affair prepare करना, और जैसे कि हमने देखा है कि recently seen the news kind of questions है, या say those recently seen the news and then states है या countries है, like the way, तो इस kind of question you need to prepare, say, and you need to update yourself by means of current affairs. Okay, तो वो say for that matter you need to use newspaper, for that matter you need to read magazine also. Then multiple revisions of previous year question paper, no doubt. I have already say proven that particular thing. Then application of logic is indispensable. आपको logic लगाना ही होगा, just because no one is having a perfect knowledge, and that's why logical sense में भी आपको बहुत से question attempt कर सकते हैं. Okay, and then location mapping should be your bread and butter activity. That the more frequent, okay, or the regularly you are doing this mapping activity, the more enhanced your skills for mapping is. Okay, and that's why say mapping is one of the most important thing है UPSC के लिए. These are what the say learning for our this video. I suppose everyone is having quite clear with those questions we have discussed, say, for this geography prelims. So with this I wish all the best for all your teams, and say wish you thank you for watching this video. Please like, comment and share this. Thank you.